Hello my dear student, welcome you again in this lecture number 20 for that topic digestion and absorption. Now we have started the study of physiology of digestion or detailed mechanism of digestion of the food material. Okay, we have seen that in mouth cavity or oral cavity with the help of the teeth and the tongue that food particles particularly are broken down with the help of teeth and mixed properly with the saliva with the help of the movement of the tongue, and then that form the bolus that is particularly swallowed, that is called deglutition, and then through the pharynx and esophagus that will be forced into the stomach. Okay, अब स्टमक में क्या है देखेंगे हम. स्टमक का जो इनर वॉल है कॉल्ड एज द म्यूकोसा लाइनिंग लेयर. ओके, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द स्टमक, उसे क्या कहते हैं हिस्टोलॉजी में हमने देखा है, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ वॉल ऑफ स्टमक. Wall of stomach, that is called as what? That is called as mucosa. It contains some epithelial cells with that typical gastric glands, multicellular glands. Okay, तो ये gastric glands जो होती है, that gastric glands are the multicellular glands like this. Okay, and it contains some neck cells. उसमें कुछ ऐसे neck cells हैं. Then also it contains the chief cells or the that peptic cells. And also उसमें कुछ cells जो होते हैं वो ऑक्सिंटिक सेल्स बोल के होते हैं. ये गैस्ट्रिक ग्लैंड हम बता रहे हैं आपको, मल्टीसेल्युलर ओपनिंग इनटू द ल्यूमेन ऑफ दैट स्टमक. तो उसमें नेक जो उसका है गैस्ट्रिक ग्लैंड का ट्यूबुलर, इस नेक में तीन टाइप के अभी हम सेल देखेंगे वहां पे. वन इज द दैट नेक म्यूकस सेल्स और म्यूकस नेक सेल्स, and they will produce what? They will produce very important secretion of mucus. Okay, then another cells are there, the chief cells or peptic cells. वो एक inactive enzyme बनाते हैं and that enzyme is called as pepsinogene. pro enzyme है pepsinogene जो inactive होता है. And then also towards the base there are present some cells known as oxyntic cells, and that oxyntic cells produce what? Hydrochloric acid. या हाइड्रोक्लोरिक एसिड वहां पे बनता है, कैन यू इमेजिन, और वो भी स्ट्रांग होता है. वैसा उसका पीएच लेवल जो ऑप्टिमम चाहिए पेप्सिनोजन को एक्टिव करने के लिए, तो वो पीएच ज्यादा चाहिए, नियर अबाउट 1.8 स्ट्रॉन्ग एसिड. ओके, तो ये तीनों मिलके जो बनता है यानी म्यूकस प्लस दैट पेप्सिनोजीन, फिर एक एंजाइम भी वहां पे और रहता है रेनिन नाम का. ओके, देन दैट HCl. So they are forming what? They are forming the, what is it, that gastric juice. Okay, this is very important my friend, try to learn. तो ये पूरे MCQ पॉइंट है. HCl in the stomach wall is produced by, correct answer, oxyntic cells of gastric gland. Then mucus is produced by neck cells of gastric gland, and that pepsinogene is produced by proteolytic enzyme is present there in the gastric juice, and that is produced by, correct answer is there, what is that, chief cells or peptic cells. ऑक्सिंटिक सेल को भी और एक नाम है parietal cells नाम का. ओके, पेप्टिक सेल जैसे इसको कहा है, the oxyntic cells are also called as parietal cells. So HCl is produced by what? Oxyntic cell or parietal cell. And what is the pH of that gastric juice? 1.8, that is required for the action of pepsinogene. Okay, अब देखो क्या होता है,
particularly in the stomach, mechanical digestion also occurs. मैंने बताया था आपको दोनों भी स्फिंक्टर बंद किए जाते हैं, फूड को अंदर उसको एनक्लोज किया जाता है. दोनों भी कौन से स्फिंक्टर? कार्डियक स्फिंक्टर फ्रॉम द अपर साइड एंड पाइलोरिक स्फिंक्टर फ्रॉम द लोअर साइड, बोथ आर क्लोज. फिर स्टमक जो है वहां पे डाइजेशन होने के लिए आप फूड का वहां पे जो टोटल स्टे है नियर अबाउट 4 to 5 आवर्स होता है. खाना अगर भरपेट खाया है हमने तो कम से कम 4-5 घंटे भूख नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि फूड है स्टमक में, isn't it? So stomach is there in which the food is just staying for 4 to 5 hours. अब क्या होता है, स्टमक में जब फूड दोनों भी वॉल्व बंद किए हैं स्फिंक्टर, तो फूड और गैस्ट्रिक जूस इस पे आने लगता है. सो इन ऑर्डर टू कैरी आउट दैट चर्निंग ऑफ दैट मिक्सिंग ऑफ दैट, द चर्निंग ऑफ दैट फूड इज कैरिड आउट बाय दैट पेरिस्टाल्टिस. ओके, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स ऑफ वेरी थिक मस्कुलरिस लेयर. इसलिए हमने बताया था स्टमक में मस्कुलरिस लेयर सबसे ज्यादा थिक है एज कंपेयर टू द अदर ऑर्गन्स, क्योंकि वहां पे ये चर्निंग मिक्सिंग करना बहुत जरूरी है. और 3 टाइप के मसल्स है वहां पे स्टमक में, सर्कुलर मसल, लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स एंड ऑब्लिक मसल्स. ऑल आर इनवॉल्यूंटरी. हमें बाहर से कुछ नहीं करने की जरूरत, अंदर के अंदर ही स्टमक का वॉल वैसा करने लगता है, पेरिस्टाल्टिस. एंड देयर द whatever the food we have left unchewed or unmasticated will be completely masticated there. गड़बड़ में हम खाते हैं तो कुछ पार्टिकल्स वैसे ही खाए जाते हैं. छोटे बच्चे को तो हम परेशान करते हैं, वो कहता है मैंने ऐसे ऐसे, वो जो बेर खा रहा था बिल्कुल वो उसका सीड अंदर चला गया, या वो कस्टर्ड एप्पल सीताफल खा रहा था तो सीड अंदर चला गया. हम बोलते हैं और अब तो क्या है, उस पेट में से आपका पेड़ आ जाएगा. But actually remember, whatever the particles are left unchewed or unmasticated with the help of the strong muscularis action, that many particles are there completely broken down into the smaller particles. Not only that, get mixed with the salivary juice, that particularly gastric juice produced by the gastric gland. तो ये जो तैयार होता है वहां पे वो particularly mechanical digestion के होता है. तो now food which is masticated, food which is churned and mixed with gastric juice will be called as chyme. उसे एक नाम दिया है, क्या नाम दिया है? chyme. वो partly digested है. And now chemical digestion also starts there. Chemical digestion यहाँ पे ज्यादा नहीं होता है. The inactive pepsinogen जो inactive है, प्रोएंजाइम कहते हैं उसे, will be converted into the active pepsin. पेप्सिन नाम का एक एक्टिव एंजाइम वहां पे बनता है और उसका पीएच लेवल आता है 1.8. ऑप्टिमम पीएच लेवल इतना लगता है. एंड नाउ दिस पेप्सिन विल स्टार्ट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स. अभी तक प्रोटीन्स को किसने हाथ नहीं लगाया था, तो प्रोटीन्स का पार्ट यहाँ पे पेप्सिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, दैट पीएच एक्टिवेशन स्टार्ट्स नाउ एंड इट विल बी ब्रोकन डाउन इनटू प्रोटियोजेस एंड पेप्टोज. ये थोड़े सिंपल प्रोटीन्स होते हैं. अभी अमाइनो एसिड तो जाना तो दूर है, तो लेकिन प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स तो बन गए हैं. ओके, तो ये बात अच्छी तरह से ध्यान दें. एंड देन अनदर, दैट रेनिन एंजाइम इज आल्सो प्रेजेंट इन द चिल्ड्रन. तो जो ओनली मिल्क डाइट पे है उस चाइल्ड में मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए रेनिन नाम का एंजाइम होता है. एंड दैट आल्सो डाइजेस्ट दैट प्रोटीन इनटू द प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन. सो रेनिन इज पर्टिकुलरली प्रेजेंट इन चिल्ड्रन.
ओके, चाइल्डहुड स्टेज और इन चिल्ड्रन, पर्टिकुलरली जो दूधाहारी है, जो मिल्क ही खाते हैं, उसके लिए. एंड नाउ द डाइजेशन इज पार्टली ऑकरिंग देयर. सलावरी हमारे इसको तो एक्शन हमने देख लिया है. तो अभी यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का बाकी कुछ नहीं होता है. और अनदर थिंग, वॉट एवर द जर्म्स एसेट्रा आर एंटरिंग, टॉक्सिक मटेरियल्स आर एंटरिंग, they will get particularly killed by that strong acidic medium HCl. तो वो भी एक बेनिफिट होता है. ओके, एंड म्यूकस इज गोइंग टू प्रोटेक्ट द इनर वॉल ऑफ म्यूकोसा और द इनर डेलिकेट वॉल. देखो अब ये इतना एसिड स्ट्रांग है तो स्टमक के अंदर की लेयर, ये जो गैस्ट्रिक जूस है, वो अगर निकाल के हम बाहर डाल देंगे हमारे हाथ पे, जल जाएगा क्योंकि एसिड स्ट्रांग है वो HCl. तो अंदर का जो वॉल है वो जल नहीं जाता है क्या? नहीं जलता है. क्यों? दैट यूकोरिएशन इज प्रिवेंटेड बाय एक्शन ऑफ म्यूकस, जो कि वहां पे एक प्रोटेक्टिव कोट बना देता है. दैट म्यूकस इज ऑल्सो प्रिवेंटिंग द डैमेज ऑफ वॉल ऑफ स्टमक. उसे यूकोरिएशन नाम का एक वर्ड दिया है. खरचटणे ज्याला आपण म्हणतो, यूकोरिएशन. ओके, खरोश जो आती है वो नहीं आती है स्टमक के अंदर बिकॉज ऑफ दिस. सो डू watch the video again to understand the things happening in the stomach. Do like, share and subscribe to my channel. I hope you are properly tuned up with me. Okay, we'll definitely continue the part in our next lecture. Till then, take care and keep learning with me. Thanks.